नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। ये न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क शहर में सबवे के द्वारा जब आप क्वींस से मैनहट्टन पहुँचते हैं तो मैनहट्टन में एक स्थान इंडियन कॉन्सुलेट आता है जहाँ हम आपके साथ चलने वाले हैं। इंडियन कॉन्सुलेट में क्या था? एक कार्यक्रम था जिसमें डॉक्टर शिव सरीन, जिनकी ओन योर बॉडी किताब नंबर 1 बेस्ट सेलर यूं ही नहीं है, इसमें डॉक्टर्स लाइफ सेविंग टिप्स हैं। इसका फॉरवर्ड CNR राव साहब ने लिखा है और इस किताब की इतनी चर्चा हुई है कि जिसके बारे में मैं आपको अभी कम समय में नहीं बता के उस कार्यक्रम में लिए चलता हूं जहां आप उनके साथ सीधे सीधे रूबरू होने वाले हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर शशि शाह ने उनके साथ बातचीत की। इसका आयोजन राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राजमाई, APQLI ने इंडियन कॉन्सुलेट के साथ किया। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं इंडियन कॉन्सुलेट और इस कार्यक्रम के प्रारंभ में जहां परिचय डॉक्टर शिव सरीन का डॉक्टर शशि जी ने दिया, वहीं संबोधन किया प्रारंभ में कौंसल जनरल श्रीकांत जी ने भी, और अपने संबोधन में प्रेम भंडारी जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ ध्यान दिलाया। इस कार्यक्रम में समापन के अवसर पर धन्यवाद डॉक्टर राज बयानी जी द्वारा दिया गया और इसका संचालन किया था नीलम मोदी जी ने। प्रश्नोत्तरी भी हुई थी। तो इस कार्यक्रम में इस तरह का उत्साह और उमंग स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर शिव सरीन जगाने में सफल हुए, जो बहुत कम होता है। आइए चलते हैं इस कार्यक्रम की तरफ, आनंद भी लें, आंदोलित भी हों। Every Indian organization is represented here. So everyone who is sitting here equal to at least 1,000, at least. So this is because the city is limited. And our consulate and everyone wanted to do elegant way. They don't want the classroom and all that. Because this is befitting a person of whom not only India, but both Indians all over the world are very proud. And who is Shiv? I'm sorry, Dr. Shiv. I'll take excuse because I know Dr. Sarin since he was in medical school. He was 5 years junior to me. So my problem was to call him Dr. Sarin, but I tried. And his humility is, he never told me anything who is, and I honestly read the newspapers, I don't know who is. It's only now when I read, I found out who is he. Because when in 20, when we are second wave, COVID wave in India, second wave, so we got second wave when Dr. Sarin called me, and I never seen he was emotional. He said, I need 1,000 oxygen concentrators now. I don't care when you do that. Shiv, you see what happened. And you know, God willing, 10 o'clock he called me, and 12:30 I got a call from Michael Dolly, Northwell's CEO. Dr. Shah, what can we do for India? I said, what do I know? You are the manager, you manage the epidemic in New York. What do I know how to manage the epidemic? He said, but I'm not on the ground. I said, let me find out. To make the story short, the next day, Harshvardhan ji and Michael Dolly called together. And to make the story short, we sent 1,095,000 masks. He sent 1,000 oxygen concentrators. He sent 12 ventilators. A lot of literature from to shape the protocols and all that were exchanged. You know, later I found out he has had many highest positions in India. He was chairman of the MCI, that is Medical Council of India, and for those people who do not know what it is, he had the power to accredit any medical school or discredit any medical school in India. And those businessmen who are sitting there know what I'm talking about. What does that mean? Okay? और कोविड में भी जब ऑक्सीजन कंसर्न के प्रॉब्लम हुई तो सुप्रीम कोर्ट मेड कमेटी एंड ही वाज हेड ऑफ दैट कमेटी। तो एक शेर याद आया मुझे कि वो मैं ही था जो बचा कर ले आया खुद को किनारे पर। वो मैं ही था जो बचा कर ले आया खुद को किनारे पर। समंदर ने बहुत मौका दिया डूब जाने, समंदर ने बहुत मौका दिया डूब जाने, लेकिन उन सबसे निकलते हुए वहां पहुंचा। लेकिन ये इसके अकेले की हिम्मत नहीं थी। He could not have done it.
unless there is another doctor with you. That was Dr. Sumita. You know, घर की बीवी आपको ये लाओ, कार लाओ, ये लाओ, तो आपका सारे वो मेरे इसके है कि दिल की हविश तन की हविश दिल को गुनहगार बना देती है, बाप के बाप को बीमार बना देती है, भूखे पेट इंसान को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। लेकिन जब अगर सुनीता जैसी वाइफ हो जिसको ये जरूरत नहीं है, वो कहती है स्टे ऑन योर प्रिंसिपल, वॉक थ्रू दैट, दैट इज व्हाट मेक्स शी, अदरवाइज शी वुड नॉट हैव बीन व्हाट शी इज। His accomplishments, I didn't know. In COVID, when we were getting concentrators, one guy from Lennox Hospital, gastroenterologist called me. I want 10 consultants to go to Chandigarh, this institute. I said, who are you? He said. So I told him, Dr. Sarin called me. Sir, Dr. Sarin, Shiv Sarin. How do you know him? I'm a gastroenterologist trained in America. I have to know him. I mean, why do you have to know him? He said, we don't know. Guess esophageal varices has been staged by him. It's not Sarin's staging of esophageal varices. I don't know that. I called him. I said, Shiv, that's not. This is not right, you know. But then I found out how much work he has done. He has established Institute of Liver and Biliary Sciences. I don't think there is any institute even in America which is dedicated only to biliary and liver sciences. I don't think there is any. Actually, Sanjeev and these people are sitting there, know better, but I don't know. And that is the premier institute. There was a patient who was dying of alcoholic liver disease. He needed transplant. I called him. He was 25 years ago, 30 years ago. He said, send him. He said, I'm going to try a new drug, and he's alcoholic. Now probably there is established reverse complete. Dr. Farooq Abdullah mentioned a story in our institute. He's from our graduate. He said same story. He sent a patient for transplant. So he is a pioneer. He moves forward. He pushes the boundaries. Now the question is, he is also very social, communal. He wants to make a change in the society, in the community. How do you do that? He started hepatitis awareness day in India. He started hepatitis vaccination compulsory in India. He thinks of the people. The question is, he has so much knowledge. How does he transmit that knowledge to people? That's the question. And he took that lesson from our Indian culture. Apne Vedas, Vedant, they are so complicated. You can't understand them. At least I can. So you know what my mother did? She didn't ask me to read any Veda already. She used to tell me stories. I'm listening. Or Vishnu Savaya. So what? I attended a lecture given by him on hepatitis yesterday. In North Shore. I honest to God, I think I'm a doctor. I didn't understand a word what he said. How can you teach them? Hepatitis, fatty liver, all this. Okay, how is patient came, lean and thin, we will talk about when he talks further. So through these stories he's telling you, and in the preface he writes, don't outsource your health to doctors. Embrace your care. You have to take the charge. If you give the charge to doctors, you are in trouble. And he has the same thing that one of my friends, Dr. Modi, was asking, what is new in the book? I said, perhaps nothing new. But everybody knows स्वच्छता important है. लेकिन सफाई कोई नहीं करता था. करोड़ मकान का हाउस था नीचे गंदी नहीं. जब नरेंद्र मोदी बोले स्वच्छ भारत बनाओ, सबने सफा. So it depends who is saying. So a person of Dr. Sarin's stature says, with the stories, that not only prevents but it can reverse the disease, people will listen. So that is why when I read the book, I was actually blown away completely. So, Shiv, I know you since you were a student, and I told you in the car that you can't write because you don't know how to write. You don't teach in SMS how to write. This is Sunita who told you how to write because she's a doctorate in literature, English. But thank you and welcome, and we will talk further. I thank you so much for, that's what I'm telling you. He was not planning to come here. He's being given a very big award by the American gastroenterologist in Washington, D.C. tomorrow. So I was in Delhi, he told me I'm going there. I said, yeah, ek raat wahan jana. And that is how we gather. And you cannot get hold of him in India, please. And I called him same thing. So he's a very busy person, but
Thank you. We organize quite a few events in the Consulate ballroom, but I would say this is probably a special event. 2 weeks back, when Deputy Consul General Dr. Varun, he's a medical doctor himself, he mentioned about the visit of Dr. Sarin, and he also mentioned about the book. And we said, we should use this occasion and his presence to do an event here. And I'm thankful to API and Dr. Mr. Prem Bhandari and other organizations who came together to put this event together today. And Dr. Sarin, my special thanks for you. You have been on time. And ma'am, welcome to New York. It's good to see both of you here in the consulate. A warm welcome to you. But today, as you know, we are discussing about Dr. Sarin's insightful book, Own Your Body, a doctor's life-saving tips. For the last 30 minutes, I was fortunate to have his presence in my room, and I was kind of getting a benefit of his insights on a few issues, which were very beneficial, and I'm sure all of you will get that benefit now. As Dr. Shah mentioned, Dr. Sarin is, has assumed very important responsibilities in government of India. I would say, he's more of an institution in himself, and we all take pride of his achievements and his contributions in India and to the people of India. And this title of the book resonates deeply. It probably, as I haven't actually got a chance to read the book, but I can imagine that this book would probably advise us to take charge of our own health, to become active participant in our own well-being. And I'm sure Dr. Sarin would delve into the concept throughout the discussions that would happen, providing us with practical tools. But I'm sure after that we'll all try to have a copy of the book to read the book and read it ourselves. I'll take this occasion since I can assume that we are having people who are interested in the healthcare and well-being sector. Today, interestingly, I was going through a report that was sent by Ministry of External Affairs to us it's a report published by Association of Indian Pharmaceuticals, so it's called API. And the report was talking about India's contribution to the healthcare sector in the United States. And I thought I should mention some statistics which were new for me. Of course, we all know the presence of Indian doctors, and I think if the number of doctors in the United States would be about 1 million, about 10% of that happens to be Indian origin doctors. We all know the strong presence of API since 1982 and the contributions they have made to the healthcare landscape of this country. But I'll talk a few statistics about the Indian pharma industry's contribution as well. So the report says that about 42% of all the US brands and generic prescriptions are Indian medicine. In 2022, Indian companies fulfilled 20% of all Medicare prescriptions, of course supporting millions of Americans with quality but cost-effective medicine. And Indian pharma industry contributed about $219 billion of savings for the US healthcare system in 2022 alone, and $1.3 trillion of savings in last 1 decade. And the projection is that in another 5 years, the American health industry would save another $1.3 trillion because of the usage of Indian medicines. So that is our contribution into the pharma industry as well. So it's a very rich and proud history of what Indian doctors and Indian pharma industry is doing for this country and the healthcare sector. So the report concludes that India-US affordable medicine partnership is the solution and probably the model for pharmaceutical supply chain sustainability. So I really felt very proud and encouraged to see that. I had known about the proud history of our doctors' contribution, and this is kind of complementary to that. But coming to today's evening, I'm sure the evening is going to be very informative and engaging. I'm sure there is a scope for asking questions and getting answers from Dr. Sarin, and I would be requesting everybody to use this occasion. And on behalf of the Consulate General of India, I once again extend a warm welcome to Dr. Sarin and Mrs. Sarin.
and to each one of you. I trust that this event, like I said, it's a very unique event, a very separate event, and I'm sure this will also make us, more conscious about our well-being and health. Thank you again, and I welcome once again. आपकी दिवाली का भी आभारी हूँ, कॉन्फ्लिक्ट का तो हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर सलीम साहब ने हमारे लिए समय निकाला। सलीम साहब ने सुन रहा था, 2-4 मीटिंग हुई, आपके बारे में धीमे धीमे पता चला, फिर आपको जाने गूगल से पता थोड़ा बहुत तो चलता है। तो आज मैंने मेरे संस्थापक मेरे आदर्श दिया में बस आपको फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर सलीम साहब के बारे में कोई आप और बात बताएं जो गूगल में नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके मेंबर। ये कोई बात नहीं, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके आप मेंबर के साथ में बताया कि आपने कभी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करे, फिर ये कहा कि मेरा फीस भी नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा मैं तो 2:30 बजे से यहाँ डेरा डाला होगा। अमूमन मैं समय पे आता हूँ, ये आधा घंटे पहले आ जाऊँ अगर मैं लोगों में से एक हूँ तो। पर मैंने कहा ऐसी महान विभूति के तो दर्शन करने चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। और जैसा कि अभी मेरे थोड़ा ज़्यादा बोला और ये कहा कि देश दुनिया में एनालाइज को जब तकलीफ होती है तो मुझे फोन करते हैं। तो आप चिंता नहीं करें, अगर आपकी और हमारी टू साइडेड मोहब्बत रही तो मैं आपके पास केसेस भेजता रहूँगा, और मेरे पास सिवाय आपका आशीर्वाद देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं 24 आवर्स न्यूयॉर्क में आपकी सेवा में रहूँगा। जीवन में कभी भी आप फोन करें रात को 2 बजे, मैं सभी फोन भेजता हूँ। आपके बारे में शशि शाह साहब ने बहुत बातें बताई, डीआर साहब ने बताई, अब तो मैं भी कुछ जान रहा हूँ। मेरा बेटा तो यहाँ पढ़ रहा है, मैंने उसको गाड़ी में बात की 2 दिन पहले। तो मैंने जैसे ही आपका नाम दिया तो उसने फर्स्ट नहीं बोला और कहा कि ये तो क्लासिफिकेशन है कि पापा मुझे समय मिलेगा। वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि फाइनल ईयर में 1 महीना बचा है, ही वॉन्ट्स टू कम, और उसका इतना सा इंटरेस्ट है वो आए और आपकी ब्लेसिंग है। ये अमेरिका के बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर साहब, आपकी तो क्या तारीफ करें, सभी कर रहे हैं। अभी जब सवाल जवाब होंगे तो किताब के बारे में पता चलेगा, लेकिन ये पता चला कि इस किताब के अंदर आपको मेडिसिन संबंध में कोई बात नहीं मिलने जाता, ये आम लोगों के लिए है। डॉक्टर साहब उसे आप प्रकाशित करें। ये किताब आम जन के लिए, बिना दवाइयों के कैसे आपको फैटी लीवर आपका ठीक हो सकता है। मैंने पढ़ी नहीं है, तो पूरी पढ़ूंगा। और आपसे भी निवेदन रहेगा कि इसे आप हिंदी में भी आप अगर नहीं है तो इसका संस्करण निकालें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैसे वाले तो पहुंच ही जाएंगे, भले आप पैसे लें या नहीं लें। लेकिन ये आम लोगों के लिए किताब बड़ी उपयोगी रहेगी। और मैं तो ये और आगे बढ़ के कहूंगा कि जो कमाई आए वो आप रखना, इसे राजस्थानी में इसको ट्रांसलेट कराने का ठेका मैं लेता हूँ। तो हमारे 10 करोड़ भाई बहनों तक वहां भी पहुंचनी चाहिए। आप राजस्थान से हैं, मैं राजस्थान का प्रमुख कार्यकर्ता हूँ यहाँ पिछले 25 साल से। तो इस कार्य के लिए मैं आपसे अलग से बात करूंगा और इसे राजस्थानी में हमें इसे ट्रांसलेट कराना चाहिए। मेरे मिस्टर की फ्लाइट है, तो मुझे थोड़ा सा अपना भाषण संक्षिप्त करना पड़ेगा। संभव से आदत नहीं पर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने न केवल जयपुर फूड के कैंप का, जयपुर फूड यूएसए के कैंप का मऊ में आके और उसका शुभारंभ किया, बल्कि उसके बाद ही हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एमईए ने पार्टनर बनाया। एमईए के बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं और भी बैठे हैं पीछे। तो आप सबका भी आभारी हूँ कि 27 इंटरनेशनल कैंप हमने किए हैं दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडोनेशिया में, और उसका सारा खर्चा विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने दिया है। 15 कैंप और होने हैं। इस वक्त इथियोपिया और श्रीलंका में कैंप चल रहा है हमारे इंडिया के साथ। अब मैं कुछ कॉन्सुलेट की बात करना चाहूंगा। ये कॉन्सुलेट 2014 से घर बन चुका है 10 राज्यों के अप्रवासी भारतीयों का, इंडियन डायस्पोरा। दिस इज अवर सेकंड हाउस। एक के बाद एक चीज आए और सबने कोई ऐसा नवाचार किया। चाहे वो मोले साहब थे तो उन्होंने कॉन्सुलेट एट योर डोर स्टेप शुरू किया। चक्रवर्ती साहब आए तो उन्होंने, और सिन्हा साहब ने, अभी थोड़ा सा कोविड पे 1-2 मिनट समय दूंगा आपको, जरूरी जानकारी ये शेयर करना चाहूंगा
उसके बाद में जायसवाल साहब आए, तो रुक ही नहीं रहे हैं। अब हमारे प्रधान साहब आए, तो अभी प्रधान साहब के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जोर से तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। स्वागत करेंगे। मैं 25 साल से न्यूयॉर्क में हूं और ये दावे से कहता हूं कि चाहे स्नो हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे छुट्टी हो, लेबर डे की हॉलीडे हो, अगर कोई इमरजेंसी केस है, अगर कोई डेथ केस है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा खुला है, सैटरडे हो, संडे हो। लेकिन आपने एक ऐसा नवाचार किया है कि अब ये दुनिया का पहला कॉन्फ्लिक्ट बना है जो 365 दिन खुलेगा। मैं चाहूंगा कि अमेरिका के नहीं, दुनिया में जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं वो प्रधान साहब की इस नवाचार का अनुसरण करें। इसके लिए आपको साधुवाद। हम लगभग आप समझें 40 मिलियन हो गए हैं आपको इंडियन डायस्पोरा, तो अगर सब आपका अनुसरण करेंगे तो बहुत समस्याएं होती है। मैं जनता के बीच रहता हूं, मुझे मालूम है कैसी कैसी समस्याएं होती है। तो थैंक यू सो वेरी मच। कोविड के अंदर 2020 और उस समय में यहाँ पर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और जहाँ काम जिन लोगों ने किया, उसमें अग्रणी लोगों में संदीप चक्रवर्ती साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, कमल राउत साहब आगे आइए, ये इंडिया के हैं, पहले पूरा यूएस, इनके बाद अब कार्गो देखते हैं, और हमने मिलकर बहुत काम किया। Consulate General, it's a rare honor for me, and I feel very humbled and happy to be here. I see many of my friends, many of my seniors. I was called SS, Shiv Sarin, and somebody was called Triple S, Shashi Shah. So, of course, all three aces in his hand, so he was able to bring me here. And for the first time, I see the best of the best people here. I see Dr. Jatin Shah and very eminent people, my friend Sanjeev and many others. I have a feeling, and I have conveyed it to the Consulate General, who very warmly met me and Varun, that we should have a health attaché in all the consulates, and the health attaché need not come from India. A health attaché can be local also, like you have a health attaché, and you can have one or more health attachés of the people who are living here. And also, I now sitting here feel you should have a collegium of doctors of Indian origin, and all of you can help Rana or AIA or Rajbhai or Afi. And that collegium can issue guidelines for Indians living in India, living in America. And these guidelines can be used by all other associations. So you have the best of the mind. If you develop guidelines for Indians living in America with the best of the mind, these guidelines can be used by us. And as far as the book is concerned, I will be reading as Dr. Shah. So one more time, thank you, and I feel very humbled and honored. An MLA way back in mid-80s or 90s, one of his sons was 7 years and the other son was 9 years, and both were very, very obese. I told them nothing happened, the children grew up. And I saw them when the elder one was about 16-year-old, and he was being taken to All India Institute for hormone therapy. And the reason was he never grew any mushes or secondary sexual characters. And I told his father, and look, they are extremely obese and they will not get better. But he didn't listen. He went to the All India Institute and they gave hormone for him. He was weighing 140 kg even now, and we got his blood pressure. It was 134/110. And this boy didn't know anything about blood pressure. He didn't know anything about
that he is not having mushes because of this reason. And then I said, well, I did tell the father, but it was not accepted by the family. Now it's too late. And I'll tell you why it is too late, and then the story starts. अभी तो कहानी शुरू हुई. Because उसके बच्चे कुछ भी कर ले, इस 17 साल वाले के बच्चे हेल्दी नहीं होंगे, सिर्फ उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हेल्दी हो सकते. And this is the reason for writing that you live for your grandchild. You cannot now live for your child. It is too late. Then it's you have to live for your grandchild, and it's too late. So, you write in your book about Janam Patri and Gene Patri. You said, पहले अपन जन्म पत्री मिलाते थे, अपने को जीन पत्री मिलानी चाहिए. So is it really always too late? How many of you want to live 100 years and healthy? Please raise hands. Healthy and 100 years. अरे भाई बाकी नहीं गिना चाहते. 110. 100 years and healthy. 110. 110. Death of aging. 100 years and healthy. Please raise hands one more time. Now everyone is wanting to live 100 years and healthy. So, अगर आप अपने लड़के के लिए या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं, वो 26 साल का है. सपोज योर सन, आजकल 26 में शादी होती नहीं है वैसे, पर इफ इट इज 26 year old, can you predict at 36 this boy will have first heart attack? Can you predict? No. I mean, you're always cannot I can predict. tell you want a Cannot. vacation. I don't know what heart attack. This is all the science in last 5 to 10 years is only this, that if at the age of 26 the person has a liver enzyme called SGPT, which is 80, normal value is 30. अमेरिका में वरुण कह रहा है 40 मानते हैं, but 30 is a good number. Please remember this. सबको हीमोग्लोबिन पता है, पर ये SGPT अगर 10 है तो आप 100 साल जी पाएंगे. All your wishes will be true because it means no inflammation inside. But if it is 80, the first heart attack in this young 26 year can happen at 36, 7 times more than people who are normal. अब आप लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, अब आप चाहोगे कि 36 पे नहीं, तब आप जन्म पत्री मिलाओगे या जीन पत्री मिलाओगे, देखोगे यार पर क्यों उसका हाई है. दैट ऑल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, फादर मदर, आपकी ओबेसिटी, उनकी ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, दैट इज द वन विच, इसमें कमांडमेंट है लास्ट पे, आप शायद बाद में आएंगे, बट जस्ट टू टेल यू, जन्म पत्री ठीक है, वो आपको ये बताएगी कि लड़का सीजी बनेगा या लड़का प्रेम भंडारी साहब कहाँ थे, प्रेम भंडारी साहब जैसा बनेगा या राणा का प्रेसिडेंट बनेगा, मिनिस्टर बनेगा. पर जीन पत्री ये बताएगी कि वो कैसे जिएगा, हेल्दी रहेगा और उसके बच्चे हेल्दी होंगे कि नहीं. तो आप बताओ, जब जीन पत्री मिलाओगे या जन्म पत्री? नहीं आप ठीक कर रहे हो, लेकिन किसी को कहना कि तेरी मेडिकल हिस्ट्री बताओ तो वहीं मामला खत्म हो जाना, आगे बढ़ेगा नहीं मतलब आप सीक्रेट लगाते हो. पुलिस लड़की के लिए पूरा ढूंढते हो, लड़की का क्या था, लड़के का क्या था, तो उसका ये भी नहीं. बिल्कुल ठीक. आपने लिखा है कि एवरीथिंग इज नॉट इन जीन्स. आपने जो इनहेरिट किया है वो ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है हर बार कि जो आपने इनहेरिट किया वो आपको होगा ही. आपको ही पता है आइडेंटिकल थिंग्स, डायबिटीज वन इज डायबिटीज वन डज नॉट, सो इट इज नॉट ओनली जीन्स. So, and you have addressed that in your book, that you should know what your genetic material is, and then how to protect to become 100 years. So, can you throw some light on that? This is a very important question. इसका मतलब आपने बहुत ध्यान से किताब पढ़ी, पैसे दे देना. खरीद के पढ़ी.
So I want this to make, I know they are all senior doctors and some very senior bureaucrats here. आपके पास गाड़ी है, आपके पास वरुण गाड़ी है ना, बिल्कुल डेट पे उसकी सर्विस कराते हैं, ऑयल चेंज कराते हैं, फिल्टर चेंज करते हैं, बेस्ट क्वालिटी का ऑयल डालते हैं। जरा सी आवाज़ होगी जो रिपेयर के लिए ले जाते हैं, पर अपनी बॉडी के लिए ना रिपेयर, ना आवाज़ सुनते हैं, ना रिपेयर देखते हैं। तो अगर आपने जो कहा वो जीन्स हैं, तो 4 तरह के बंदे पैदा होते हैं, 4 तरह। फादर मदर को कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, दादा दादी को कुछ नहीं था, नाना नानी को नहीं था, सब हेल्दी थे, और आप उस खानदान में पैदा हो गए, तो आप समझ लीजिए आपका भाग्य खुल गया। मतलब आपको विरासत में कोई भी खराब चीज नहीं, तो यू आर कैटेगरी ए, टॉप क्लास। दूसरा है जिनके माता पिता को, दादा दादी, किसी को भी खानदान में कोई बीमारी थी, 10 बीमारियां हैं, मैं बाद में बताता हूं, उनमें से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं था। आप उस खानदान, उनको था, और आप पैदा हो गए पर आपको कुछ नहीं हुआ। मतलब माँ का या बाप का जीन्स न्यूट्रलाइज हो गए। फादर की फैमिली में था, मदर की में नहीं था। यू आर बॉर्न एंड यू आर हेल्दी, और आपने अपने को मेंटेन किया, ऐसा बच गए। ये सेकंड कैटेगरी का बंदा है। थर्ड है जिसके यहाँ दोनों को या एक को था, और आपको भी वो सारे, सॉरी, डिफेक्टिव पीस बन गए आप पैदा हुए एज ए डिफेक्टिव पीस, बुरा मत मानिएगा, वी ऑल प्रोड्यूस डिफेक्टिव पीसेस। तो आप डिफेक्टिव पीस पैदा हो गए और आपने ध्यान नहीं दिया और आप बिगड़ गए। यू आर कैटेगरी 3 एंड यू आर बाउंड टू हैव डिजीज एंड यू आर बाउंड टू हैव चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू बी लाइक दिस। एंड फोर्थ कैटेगरी है कि यार अब तो मेरे को तो डायबिटीज है, अब क्या बता रहे हो डॉक्टर साहब, मेरे को तो बीपी है, मेरे को तो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है, अब क्या बता रहे हो। ये सारे कैटेगरी 4 है, पर वो हिम्मत नहीं हारे। अगर वो बुक पढ़े ऑनेस्टली, दे ऑल कैन गेट सम रिड्रेसल। डोंट ऑलवेज थिंक यार अब क्या करना है, जो होना था हो गया, अब तो ऐसा नहीं। यू कैन रिवर्स। सो द होल आइडिया इज आप किस कैटेगरी के बंदे हो, ए, बी, सी एंड डी। एंड आवर एम इज जो रेड लाइन में है वो येलो पे आ जाए या ग्रीन में आ जाए, जो ग्रीन वाला है वो ग्रीन में रहे, येलो वाला भी ग्रीन में आ जाए। ये किताब पढ़ के यही मैं कहना चाहता था जो आपने कहा कि जस्ट बिकॉज सो कॉल्ड इफेक्टिव पीस डज नॉट मीन दैट विल एंड अप दैट वे, बिकॉज यू नो जैसे कि जीन डिफेक्ट होता है, लेकिन एक को डायबिटीज है दूसरे को नहीं डिफेक्ट, दोनों में सेम ही था। सो दिस बुक पॉइंट्स आउट वंस यू नो देन व्हाट टू डू, नॉट टू, मैं डबल I don't want to use that word, but not to initiate that gene. जो अपने साइंस में, मैं कल एक लेक्चर अटेंड किया था मैंने, इनका मेरे कुछ समझ में नहीं आया, ईमानदार से कहता हूँ। तो अगर मैं एपिजेनेटिक्स से बात करना, लोगों को समझ में नहीं आया बोल क्या रहा है। मोटा मोटी बात यह है कि जीन तो डिफेक्ट हो गया, लेकिन उस पर एक दूसरी हिट होनी जरूरी है टू एक्टिवेट दैट जीन। तो दूसरी हिट है ना, उसके लोग अंग्रेजी में एपिजेनेटिक्स पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये दूसरी हिट की बात है। तो आई थिंक ही हैज क्लियर्ड इन दिस बुक वेरी नाइसली व्हाट आर दोस सेकंड हिट्स। ओबेसिटी है, ओबेसिटी पर आपने बहुत जोर दिया है। नाउ आपके पास कई सवाल आते हैं। खैर एक बात बता दो, एसजीपीटी शायद मैंने तो कभी चेक नहीं किया। अच्छा वो भी खैर हम तो क्रिएटिनिन तक रुक जाते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी, कोई प्राइमरी डॉक्टर ने कोई कहा नहीं होगा नहीं, लेकिन आपकी किताब से पता लगता है। दूसरा आपने इतना फैटी लीवर चेक करते हो, अब मैंने तो कभी किसी डॉक्टर को, कौन कौन डॉक्टर जो है फैटी लीवर चेक करते हैं? अच्छा ठीक anyway, the point is obesity, blood pressure and even diabetes, you mention in your book that they are hallmark of problems, and even liver. And although you wrote that people who are obese, उनके फैट अंदर होती है, वो फैट अंदर चली जाती है, लेकिन even the people who are lean and thin, even they can get fatty liver. So आपने इसमें कई बातें बताई हैं और डाइट को से जोड़ दिया। कैन यू थ्रो सम लाइट, बाकी अपन क्वेश्चन आंसर में करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था कि ये एड्रेस करना जरूरी। मैं आपको एक बार समझाता हूँ। मैं थ्रू यू प्लीज टीच थाउजेंड्स ऑफ अदर डॉक्टर्स एंड पीपल एंड ब्यूरोक्रेट्स। सो
हम लोगों के लिवर में 5% से कम फैट होनी चाहिए। जैसे 100 ग्राम का लिवर है तो 5 ग्राम फैट हो सकती है। अगर 10 ग्राम या 10% हो गई तो वो फैटी लिवर हो गई। अब फैटी लिवर से कई प्रॉब्लम है। अगर लिवर के अंदर फैट के सेल्स होंगे तो बॉडी की इम्यूनिटी सोचेगी यार ये कैसे अजीब से सेल है, उनको मारो। तो फैट इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, वो धीरे धीरे स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं, लिवर में फाइब्रोसिस, लिवर की स्कारिंग, सिरोसिस, लिवर कैंसर, एक जर्नी है। और भारत में 1 out of 2 इज हैविंग फैटी लिवर। तो आप सोचोगे यार उसके भी है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, उसके भी है, छोड़ दो। बट नो, इट्स ए फायर अलार्म एंड आई टेल यू व्हाई एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि अलार्म फायर को बुझाना जरूरी। अब लिवर में फैट हो गई, लिवर के सेल में अगर फैट है तो इंसुलिन नहीं जाएगी। इन वेरी क्रूड टर्म्स, it is insulin resistance, that the cell will not work, and here we have an MD, we have other people around, so the insulin will not enter into your liver cell. So pancreas क्या करेगा, और इंसुलिन बनाएगा, और इंसुलिन बनाएगा, and after a while your pancreas will give up and you get diabetes. So diabetes is a liver disease. Your pancreas gets exhausted, तो फैटी लिवर के करीब 15 से 20 साल बाद डायबिटीज है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू हैव फैटी लिवर एंड यू वांट टू प्रिवेंट इट कि मुझे डायबिटीज नहीं हो, गेट रिड ऑफ फैटी लिवर। दैट्स पॉइंट 1। फिर आप जाते हैं अपना, यू गो एंड गेट योर ब्लड टेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू गेट ईयरली हेल्थ चेकअप? ऑल। हाउ मेनी हैव रेज्ड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स? प्लीज रेज हैंड। डोंट बी हेसिटेंट, टू देख नहीं रहा, कोई इंश्योरेंस वाला नहीं है। हाउ मेनी हैव रेज्ड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स? सो फ्रॉम वेयर हैज दिस कोलेस्ट्रॉल कम? डिड यू आस्क दिस? This cholesterol or triglyceride has come because liver is filled up with fat and this is spilling into the blood. तो जिस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है उसको तो फैटी लिवर है। फिर ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाता है? बॉडी में घूम रहा है, ये डिपॉजिट होगा आर्टरीज में, योर आर्टरीज बिकम हार्ड एंड यू गेट ब्लड प्रेशर। So 15 to 20 years later, after your cholesterol, you start having blood pressure. It goes to your heart, you get heart disease, stroke, cancer. So the relation starts, it's like a molten, I would say, iron circulating and causing problems. So fat in the blood is a result of fat in the liver. ये फैट जाके जमा और कहाँ होती है? रास्ते में गॉल ब्लैडर आता है, वहां पे यू गेट गॉल ब्लैडर स्टोन। द फैटी लिवर इन ए वे इज द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ योर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। अच्छा, आदमी कई बार कहता है यार मैं थक जाता हूँ, 35 साल का है, 30 साल का है, 3 बजे के बाद सर मेरे तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, थक जाता हूँ। All the muscles become weak because muscles also have fat, extra fat. If you have fat in the liver, your muscles have fat, they are not as good. और अगर आपने 30 मिनट एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज का मायना बता दूं? आप तो वैसे बहुत एक्सरसाइज का मायना क्यों बता? What is the beginning of exercise? Anybody? Sweating. Perfect. Who said that? Sweating. आपकी किताब पढ़िए। हम लोग घूम के आए, सर मैं तो 30 मिनट घूम के आया पर सर कुछ नहीं होता। दैट इज वार्म अप। एक्सरसाइज स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट स्वेटिंग। स्वेटिंग प्लस 30 मिनट्स इज द एक्सरसाइज रेजिमेंट। एंड कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि आप छुट्टी वाले दिन भी खाना खाते हैं। तो ये नहीं अमेरिकन स्टाइल में 5 दिन काम कर रहा है, 2 दिन छुट्टी, इतना ही। Exercise is all 7 days, and then if your muscles don't have fat, because जो शुगर आप लेते हैं वो 2 ही जगह जाती है, लिवर में, मसल में। अगर मसल नहीं चली तो सारी शुगर लिवर में गई and it becomes fat and you have fatty liver. Is this alarming or is this making sense? कि भाई alarming ना, ये बता रहा है शोक भी
कि भाई डायबिटीज इज ए लिवर डिजीज. इफ दिस कॉन्सेप्ट एंड यू वांट टू प्रिवेंट डायबिटीज, लोग कहते हैं इंडिया इज द कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल, पर वो हुई इसलिए कि फैटी लिवर से डायबिटीज पैदा हुई. तो हम करीब करीब 2 or 3 times more fatty liver than diabetes. अगर 10% को डायबिटीज है तो 30 to 40% है फैटी लिवर. आई है, आपने कहा कि अगर फैटी लिवर है उससे कोलेस्ट्रॉल, उससे 10 बार हाई ब्लड प्रेशर एंड दिस एंड दैट. Majority of the patients I see have all these so-called metabolic syndrome, high blood pressure, high cholesterol, and diabetes. Okay. Now, if it starts in the liver and you are finding it after 10, 12 years, so what age you think their liver should be checked so that we prevent it? Because if I starting after you tell us high blood pressure and diabetes, Let's ask the people, what age should we start checking for fatty liver? Please. Adolescent. Sorry? Adolescent. 14 years. 14. Anything Neelam? So you start seeing fatty liver from 1 month of age. नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड. 1 month of age, if the mother is overweight and obese and she is feeding the baby in the night, the child is likely to develop fatty liver. These are some of the concepts I will share with you. 6 महीने का बच्चा है और अगर उसको एक बार फ्रूट जूस दिया और नहीं दिया फ्रूट जूस, that child by 5 years will have fatty liver. So the prevention of fatty liver must start from age of 1 month. But yes, when do you detect it? I would say 3 to 5 years onwards, the fatty liver features are visible in the young child. And Bronx में आप कह ही रहे हो 5 और 7. मैं जब एक छोटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, जीबी पंत में, तो जो पेशेंट ऊपर जाता था कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए, मायोकार्डियल के लिए, मैं उसको पहले नीचे देखता था और उसके बच्चों को बुलाता था, मोस्टली मुस्लिम लोग. वुड यू बिलीव दैट 5-year, 7-year-old children of those who were going for cath and stent placement, the children already had fatty liver. So in my mind, I'm very clear, there is no age. If your parents are unhealthy or obese or diabetic, we should start corrective measures right at birth. Don't wait for 5. For example, I'll give you Bronx वाले का एक बड़ा important point याद है. It's a very famous study in our journal Hepatology. अगर 10 साल का बच्चा ओबीज है तो उसके हार्ट की एज कितनी होगी? 40 साल. I'm very putting it simple that 10-year-old child who is obese, his heart has worked so much because his arteries are already slightly thickened, as if he is pumping against a high pressure, and the age of the heart is 40 if his weight is overweight. He is obese, not overweight, he is obese. So therefore, we must remember that early intervention is extremely important. Is it worrisome? I hope it is worrisome. I hope this point strikes everyone who is here. It's not to scare, but to make you aware. It's amazing that you started screening the children of the people who are going for. And thank God you're not in private practice, otherwise nobody will allow you. And I'm sure in the government also you must have been doing. I just want to, I think we can keep talking about it till morning. I still love to hear from you, but I think we will take questions from the audience. But I just want to say one thing. In your book, on one hand you are writing that for exercise you are striking. On other hand, gives an example that a driver, his lifespan is shorter than a conductor because conductor is walking in the bus. So it is, if somebody is not sweating, it doesn't mean that he, I'm quoting this. Yes, this is a famous London bus driver study published in 1940s. That is the beginning of the awareness in UK about health issues.
So what they did was double-decker bus. So they found कि यार ड्राइवर की जल्दी डेथ हो जाती है, कंडक्टर ज़्यादा साल जिंदा रहता है, वो कंडक्टर ऊपर नीचे करता है और ड्राइवर बैठा रहता है. This London bus driver study made a seminal change in the way people were living, and I do hope. मैं एक और किस्सा बता दूं आपको. आप में से कईयों ने मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? सुना है ना जी, पढ़े भी everyone. So when I joined All India Institute in '78, it was my third day, and I was taking the elevator to go to the 7th floor, and I found a baldish man. It was 6:30 in the morning because I was early. फिर तेरे को कहाँ जाना है? मैंने कहा सर मुझे डॉक्टर भाटिया के वार्ड में 7th फ्लोर पे जाना है. चलो मेरे साथ. सीढ़ी से ऊपर लेके गए. He deposited me in Dr. Bhatia's cardiology ward to see. And then he said, अगली बार तुमने लिफ्ट ले ली तो मैं टांगे तोड़ दूंगा. He was Professor M.M.S. Ahuja, the endocrine guy, and I still remember, and he told me lifts are for patients, the stairs are for doctors. And I remember, and I want to share this with you because how I changed, these are not in the books. This is all self-learning, and I do hope we can teach the people in America. That's very nice of you and kind of you, self-learning, but you need particular eyes for that. So thank you. And let's take some questions. Ajay? The first thing I'm going to do is to make a remark on Dr. Sarin. When I was a student at AIMS and then did my MD in pediatrics, he was doing his DM in gastroenterology. And our pediatrics and GI were on the same floor. And you know, this young man, handsome, you know, I asked him, why are you doing medicine? You should be in films. To stall Hansen for his age. I don't know whether he even listened to it or ignored it, but I thought that this was an incredible remark and I hope you remember it. Two questions. Firstly, I'm very enlightened by a little bit of things that he told today. I don't know whether I forgot to learn in medical school or whether they forgot to teach me in medical school. Seriously. I never knew that this amount of fat was a very important part of the fat in the liver, and how diabetes is nothing but a disease of the liver. How do you treat it right from the beginning? I'm asking this question because our grandson is gaining weight every day, and he feeds 3 times at night. So maybe I should tell them not to feed him so much, so that in future he doesn't become a fatty liver patient. Is that a correct statement? The correct statement is that the day and night cycle must be taught to the infant at the earliest possible time. The 3-hour feeding may be extended to 5-hour feeding in the night. So this is the first lesson in time-restricted eating to the infant. I'm not saying don't feed him. You feed him 3 times or 5 times instead of intermittent fasting, which to me is very harmful. All the cardiac events can come. But the time-restricted eating, दिनचर्या सूर्यास्त से बाद में नहीं, सूर्योदय से पहले नहीं. But he's only doing souls, that's why I was asking. No, I'm just saying, this is a paper in, I think, Science or Nature, how you change the mindset of the baby that this is not to happen. In the night when there is dark, it's not to eat. And the 2017 Nobel Prize was on the clock genes. And the clock genes means how you regulate your morning, evening, day and night cycle. This is a humble suggestion, but you can correct me. Thank you. Thank you. Yeah, that's Sarin. Very nice listening to you. Can I ask you? Like Dr. Ajay Jain, I also remember during my residency at the All India Institute of Medical Sciences, you doing your DM along with Professor V.N. Kandan and M.K. Sharma and that Raj Career Center for Hepatology.
at age. My question is more specific. You discussed about category A. You say if you are genetically, if you come from parents who are absolutely blessed with no disease, and you're both from the father's side and the mother's side, then you don't need to worry. I will bring, and a lot of us are blessed with that. A lot of us know, I've come from a village from Andaman and Nicobar Islands, studied at AIMS. Our parents did not have any of these chronic diseases, neither our grandparents had. Yet we ended up having, at least I ended up having diabetes, and I studied a lot about the role of epigenetics, the role of the environment, and the role of the stress in modern society, in metropolis India, in New York City. The role of the stress has definitely a role of cortisol in the blood on the fight-flight reaction, dealing with everyday stress. And there is a significant impact of that in terms of contributing towards fatty liver, in terms of maybe increasing more fat food to increase calories to fight with the fight, and thereby contributing. But again, the base side, go back to the base that genetically our parents did not have, and they lived till 95. My father lived till 95, my mother lived till 88. So one can see that there is definitely a role of epigenetics. And at some level, we have minimized that instead of just talking about the diet, not talking about the environmental stress and the behavioral response to the environmental stress. I do agree with you. You are one of those lucky ones, and that's where I said if you are in the green lane, you should maintain the green lane. And New York is the best of the place to work, probably the worst of the place to walk on the streets. I just walked today. Har do kadam ka khane ka. Everywhere there is a telewala who is selling something, and the portions are so big. So what can you do in New York or places like this? Because you eat and the environment is like that. But I think if you're born lucky, I do agree with you. Sorry, food is a buster, but I would like that your children should not have, that is where the role is. Next, we'll keep the questions very short. Please ask 2 sentences. I have most. Make it question. Only question. be working. Okay, it's working. I have 2 questions. One is, there was a corporation called Council, which is a biogenomics corporation, and they had created a test. And this test was a saliva-based one, and it tested prospective parents for autosomal single gene recessive disorders. We were talking about gene patra, so I was interested in that. So they were getting very good results with that. So they even got an award from Wall Street Journal for that, because it was the interest of public health, it was cost effective, and it was groundbreaking technology. So if you could comment on that, that's question 1. Question 2, a 7-year-old who demonstrates gallstones. Can you please talk about that as well? Thank you. So I'll answer. The genetic tests today are probably difficult for a common man. The book is written, and मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हिंदी में राजस्थानी में करना चाहते हैं. I admire the saliva test, but I want all of you to do one test right now. All of you. Just put your hand on your neck and see कि मुझे कोई warts तो नहीं. Anyone? क्या नहीं है? Warts, कोई मस्से तो नहीं. अच्छा. इसमें पेज नंबर 71 पे पिक्चर दी है. If you have warts or you have a black line, it's very suggestive of, we call it in medicine acanthosis nigricans. If you have warts और if you have, हम सोचते हैं मस्से निकलवा दें डर्मेटोलॉजिस्ट के, वो जाके स्किन निकलवा देते हैं. But that's a very suggestive sign. तो अगर हम न्यूयॉर्क में जितने बार्बर्स हैं, नाई, उसके अंदर सब जाते हैं 4 हफ्ते में, उससे कहते हैं भैया जो तेरे यहाँ बाल कटाने आए और उसके यहाँ ये दिख जाए, आप देखें सीजी साहब, वरुण, page 71, just see, have a look at the picture. I purposely given this picture and I have verified it in hundreds and hundreds of patients.
And if you have this, before I forget, please remember that you should go for a health check, especially for fat in the liver. Second is the same page, waist to hip ratio. अगर आपकी कमर 80 सेंटीमीटर से एज ए फीमेल ज़्यादा है और 90 सेंटीमीटर से एज ए मेल ज़्यादा है, then you should worry. अब कितने लोग होंगे मैं पूछूंगा नहीं, दिस इज a public thing, so I will not ask. But remember, the waist above 90 or in females above 80 is very unhealthy. So we should convert this as a patli kamar. So these two things, before I forget, are genetic testing. You don't need a doctor, you don't need an expensive test on that. Now a 7-year-old gallstone. There is a story in this of a 15-year-old girl, but there is also a story of a 9-year-old girl, and I do not want to repeat her name. This 9-year-old girl came with acute pancreatitis, severe pancreatitis, and it was gallstone induced. उसकी उम्र 9 साल थी, वो वेंटिलेटर पे गई. Now she is 34. She was so chubby and could lose weight. Now she is full-blown diabetes. She has gallbladder surgery. She has pancreatitis. She has all these problems, and this is genetic. I will also tell you of a story briefly, because that is another story number 2. I saw a boy before I came here. He is 30 years old. Now, he is a London marathon runner. BMI is 22. When he came, I asked him, तो कहते अंकल आप तो भूल गए होंगे, मैं जब 13 साल का था तो आपने कहा जिंदगी में कभी मोटे नहीं होना, मेरा BMI 22 है, नाम है मैराथन रनर, लंदन मैराथन रनर. मैं बड़ा खुश हुआ. मैंने कहा यार इसको याद है 17 साल बाद. उसके फादर ने कहा सर मैं इसलिए लाया हूँ कि इसकी आप रिपोर्ट देखो. उसकी रिपोर्ट देखी, उसका कोलेस्ट्रॉल 198, उसका LDL 142. मैंने कहा तेरे तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना ही बनना है, कुछ नहीं कर सकते. मैंने कहा तेरी मदर को तो नहीं है? मदर बगल में बैठी थी, मेरी तो सर्जरी हो गई. फादर बगल में बैठे थे, मेरी भी सर्जरी हो गई. अब ये लड़का अगर मोटा हो गया होता, अभी तो फॉर्चुनेटली उसका BMI इतना पतला दुबला था, अगर ये मोटा हो गया होता तो इमेजिन करिए क्या होता. एंड देन आई सेड यार हैट्स ऑफ, तूने मेरी बात मानी, तू पतला दुबला है, अभी तक ठीक है. ना उसका BP हाई था, ना शुगर थी, एक्सेप्ट ही वॉज लिविंग विद द जीन्स विच द पेरेंट्स गेव हिम. So this is the story. Now we see 3-year-old with gallstone, 3-year-old, 7-year-old तो है ही. And all this is how you get your bad liver and the fat coming out from the liver. So what are the 10 commandments? 10 commandments is page 290. Anybody who would like, please read page 290. अभी जिनके पास है वो देख लें. 290 का पहला कमांडमेंट, ये मेरे बहुत दिल के करीब है, इसलिए मैं बहुत दिल से शिद्दत से कह रहा हूँ आपको. फर्स्ट कमांडमेंट है कि मेक योर फैमिली ट्री. हम लोग देखते हैं कि यार विरासत में क्या मिला, यार 2 मंजिल की इमारत मिल गई, 2 एकड़ जमीन मिल गई, विरासत में क्या मिला? हम ये देखते हैं फिजिकल इनहेरिटेंस, पर ये नहीं देखते कि यार मेरे नाना को ये था, दादा को ये था, नानी को ये था, दादी को ये था. अगर हम अपनी इनहेरिटेंस सारी मिला के एक फैमिली ट्री बनाएं, 50 लोगों में से 10 लोगों को ये था, तो मुझे क्या मिला? What am I? Who am I? The first commandment is please make a family tree, and then you will know यार मेरे बच्चे कैसे होंगे. तो वाइफ की भी फैमिली ट्री है, मेरी भी फैमिली ट्री है, तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा. तो ये मेरे को बहुत, and this is a walking gene theory. The genes walk and they can be kind of stimulated by epigenetics, as Dr. Bhatia has said. Thank you. Okay. Dr. Inderpal Thavda has one question, then I would like to ask general public some questions, because this is not a medical book. So if you don't mind, I'll take some questions from general public. So thank you. Wrap up करना है. तो 2 क्वेश्चन जनरल, एक आगे छावड़ा के पास, हाँ?
प्रेम भंडारी साहब पब्लिक क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं मेरे साथ, हाँ वो तो पर्सन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन। So I have a comment and a question. So I'm a primary care physician, general internal medicine. जो आप describe कर रहे हैं, that is my दिनचर्या. Every single day, my patients के, I look at their neck, and कई बारी offend कर देता हूँ patients को कि you have this black lines that you're probably going to get diabetes. Watch out for that. And I check their A1C. The A1C is in the pre-diabetes range. Do you agree with some of what I have written? Absolutely, absolutely. Oh, I see. Many years ago, when I was a resident, 93, 95 की बात है, Dr. Sanjeev Chopra, Deepak Chopra के भाई जो हैं, he's an eminent gastroenterologist at the MGH at Mass General. He was giving a lecture, and that's when I first became aware of the fatty liver problem in our community. And since then, I have paid very close attention to that, and मैं आपको US के Indians का perspective बता रहा हूँ. आपने बात की कि we should have a collegium of problems that Indians face in the United States, living in the United States. So I see that all the time. If I look at the LFTs में जो आप बता रहे हैं, SGPT is elevated a lot of times. And दुबला पतला हो चाहे मोटा हो, it doesn't matter. I do see it, and then unfortunately the patients that I serve in Queens, there are a lot of taxi drivers who are sedentary. I do see a lot of alcoholism in that community also. So we get a lot of whammies, and then I'm so glad that our student Dr. Sanjay Satpathy, he is the chief of hepatology at our hospital. So he was the one who was doing all these ultrasound for the 5-year-old. Sanjay ka one of the extra projects other than his DM. So anybody going for angio at 7 in the morning, me and Sanjay would start doing. He wrote a paper of 491 patients going for angiography. He never published because he moved to the US. But this was the real work Sanjay had done with me. So coming to the question, so I agree totally with you, because like I said, every single day I'm looking at these patients and I'm predicting इनको 5 साल में क्या होने वाला है, 15 साल में क्या होने वाला है. And that, I've been in practice for 23 years, and that is coming true now. Unfortunately, a lot of my patients, I've lost a lot of patients because of heart disease, because of strokes, because of things that we predicted. अभी मैं बता रहा था प्रधान जी को, my youngest patient, 23-year-old college student, he was moving in, air conditioner को pick कर रहा था, he developed chest pain. Friday को वो आया, Friday को उसके साथ ये हादसा हुआ. Monday को he came to me, he was sweating, he looked sick. I got an ECG, he had FC elevation MI. Massive heart attack, his heart function was less than 30%. 23. He's hale and hearty today after 23 years. So the question... What will happen to his children is the question. Right. Because you require at least 2 decades of silent genes. Exactly. अब उसके बच्चों का कुछ नहीं हो, उसके grandchildren का ही हो सकता है. So I took care of his mother also. She had type 1 diabetes in the past. So the question that I have for you is, I have identified somebody with fatty liver, NAFLD जैसे हम जिसको कहते हैं. Now what? How to treat? That we forgot. So there are 2 simple messages everyone can use. Height minus 100 is your weight. अगर आप 170 सेंटीमीटर हैं तो वजन 70 किलो. पर अगर डिफेक्टिव पीस पैदा हुआ है, you know now by now defective piece ना, नहीं पता लग गया. पर आपकी गलती से डिफेक्टिव नहीं हो, बस खानदान के कारण डिफेक्टिव पैदा हो गए. जैसे मारुति गड़बड़ बन गई तो यू कैन विड्रॉ दी मारुति और फोर्ड कार, बट यू कांट गेट द चाइल्ड बैक. वो तो हो गया. तो अगर पेरेंट्स में जो गड़बड़ है, मतलब उनके कारण आप ऐसे पैदा हुए, तो वेट हाइट माइनस 105, तो आपका वजन 65 होगा अगर पेरेंट का, आपकी हाइट 1. और फीमेल्स के लिए हाइट माइनस 105 फ्रॉम द बिगिनिंग, और अगर पेरेंट हैं तो हाइट माइनस 110. वेरी सिंपल फॉर्मूला कि ये तो मेरा वेट है. पर अगर फैटी लिवर हो गया है, इसके बावजूद देन दैट पर्सन हैज टू लूज अनदर 3 to 10% of weight. There is no shortcut. The BMI levels are going down and we are eating more. So the one way. And the second way, इसमें वो लिखे हैं 4 lifelines. The 4 lifelines, and there are 50 tips to live long. The first tip is कि घर में weighing scale हो, रोज अपने को वजन करें, हफ्ते में 1 दिन में.
4 lifelines. The first is slim and fit. Slim and fit. And you do not know what fitness means. Fitness means the exercise level is what we test by talk test. Talk test मतलब आप बोल नहीं सकते. एक sentence पूरा नहीं करो, that is exercise. So slim and fit. The second, of course, is when to eat, what to eat, and how much to eat. And how much के लिए simple formula, use the dessert plate, don't use the dinner plate. बुरी बातें हैं ना सारी बातें बुरी हैं, पर ठीक है, कभी कभी पार्टी पे बर्थडे पे फुल प्लेट में ले लिया, बाकी डिनर प्लेट इज ए गुड प्लेट. एंड थर्ड इज ए रेस्टोरेटिव स्लीप एंड दिनचर्या. एंड 7 hours आई नो इज स्लीप. मतलब इसमें भी लिखा है, मेरे फादर ने मुझे बताया था, पूरी दुनिया में 2.5 सुख हैं. दुनिया में 2.5 सुख हैं. पहला सुख निरोगी काया. दूसरा सुख हेल्दी माइंड. पहला सुख है निरोगी काया. दूसरा सुख है रात को अच्छी नींद आ जाए. बाकी आधा सुख पूरी दुनिया. तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स कि यार जॉब चली जाएगी, पैसे चले जाएंगे. अच्छे से सोओगे और हेल्दी रहोगे, बाकी जिंदगी ठीक रहेगी. एंड फोर्थ लाइफ लाइन इज मेडिसिन. सो डोंट एवर यूज लाइफ लाइन 4. डोंट आउटसोर्स. आपने बिल्कुल हिट किया. This is my philosophy, and I tell my kids, don't take medicine. Don't outsource your health. Earn your health. Health cannot be given. It has to be earned. Thank you, sir. Now, can we? Sir, एक last lemon. Perhaps too many questions, but I think 30-40 years ago, and I share the same ideas. My friend asked a question because he has been waiting. That's okay. Dr. Veni Jain. I'm a cardiologist, and a very common book that we refer to in counseling about weight loss is a book called Obesity Code, CODE. Very, very popular book. The author stresses about intermittent fasting, and I was a little surprised that I thought you will be very in support of fasting and intermittent fasting. Can you give your sense for your idea? Yeah. First to tell you, with all respect to your cardiology community, this book was launched in Mumbai a few months ago, 2 months ago. And we had one of our guests of honor, Dr. Panda, from Asian Heart in Mumbai. And he had read the whole book. And I was very pleased and kind of indebted to him that he's going to put this book in the patient's area free, whoever wants. He says, after reading this, I don't have to tell patients how to get protected from heart disease. So Dr. Panda said, I'll keep it there. Anyone who wants can take the book, read it so that I don't have to tell them what should be done. So that is part 1. Part 2, intermittent fasting can be for, let's say, few months. It's not a bad idea. But I think time-restricted eating is a better idea, and that becomes part of your life. Time-restricted means if you can manage by 8 o'clock. Why is it important, time-restricted eating? And I want everyone, this is a science question, but I want. When you eat, you do not eat. It is your bacteria which eats. They will never go to sleep till 2 hours after your food. आपने 8 बजे खाया, your bacteria are trying to take out the energy and they're working. And this is the 2017 Nobel Prize whole thing, that if you sleep early and your clock genes, both the central clock and the peripheral clocks work together, you're much better off. To put it politely, that eating early is better. Second part, if you eat the same food at 6 o'clock and you eat the same food at 10 o'clock, 15% more calories are taken out from the same food. These are papers in Science and Nature. कि उसको रात को खाना दिया या शाम को खाना दिया. The animals, the mouse. So the bottom line is, if you are eating late, then you extract much more. Food
calories from the same food. So in my mind, eating early and not eating for 12 hours in the night and day is a better idea than a intermittent fasting. तो एक तो मैं ITV गोल्ड के साथ रहा हूँ 25 साल से, अभी भी हूँ। एक मैंने स्पिरिचुअल हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब चैनल शुरू किया HerambaStudio, और मुझे लगता है जब बॉडी अगर हेल्दी नहीं है तो फिर स्पिरिचुअल बातें करने का मतलब भी नहीं रहेगा। आपकी किताब मैंने थोड़ी सी पढ़ने का सौभाग्य हुआ और मैं देख रहा था सारे क्वेश्चंस मेडिकल ओरिएंटेड थे, विच वाज नेचुरल, बट आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू कि जिस तरह से आपने अपनी स्टोरीज को नरेट किया है और उसमें काफी टर्म्स ऐसी थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन चूंकि आप वो माँ बेटे का जो एक दूसरे का प्रेम है, उसकी एस्पिरेशंस है, उसको जिस तरह से आप नरेट करते हैं, मुझे लगता है आप बॉम्बे में भी एक्टिव हैं तो काफी फिल्म वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप बहुत अच्छा लिखा। तो बट ढूंढ रहा हूँ, हाँ, लेकिन जेन्युइनली द क्वेश्चन इज ये जो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग और presenting your ideas in the form of a book by writing, it requires some extra skill which is not medical skill. तो वो कैसे डेवलप हुई है आपकी? It was natural, yeah, you worked on the craft of writing and putting your ideas together in such a way that for a layman जो कि I was getting distracted by cirrhosis या पता नहीं एस्ट्रो, पता नहीं क्या क्या वर्ड थे, मैंने तो कभी सुने भी नहीं थे, but still it was holding me tight. So thank you. Kindly say something about your writing skill. I never knew this book would be found useful. Thank you for your positive support. पर हाँ, बड़ी इंटेंस डिज़ायर से लिखी थी और मेरी राइटिंग स्किल्स के बारे में आप लोग ज़्यादा बताएंगे मेरे से, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट हाँ, ईच वन ऑफ देम आई फील वो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करती। ईच स्टोरी इज ए सिंबल फॉर millions of people, and I think this is a opportunity for change, and I'm learning, and thank you. आपने किताब पढ़ी और जो समझ में नहीं आया उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है, आजकल जो बच्चों के साथ स्ट्रेसफुल करियर बिल्डिंग इन सबके अंदर उन्होंने अपना आपको एडजस्ट कर रखा है, ऐसे में आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आपके जो ये लाइव लेसन्स हैं, अगर उनका सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा प्रचार प्रसार हो। बिल्कुल, मैं कहूँगा प्रचार प्रसार तो आप करेंगे, पर मैं 3 बातें कहूँगा। ठीक है। पहला कि हम लोगों ने दिल्ली में सर्वे किया, 13,000 बच्चे, प्रोजेक्ट है स्माइल, स्ट्रॉन्गर इंडिया थ्रू मिलियन हेल्थ एजुकेटेड स्टूडेंट्स, 1 मिलियन, अभी 13,000 की। दिल्ली में 13,000 में से जो 18 से 25 साल के हैं, सिर्फ 30% लड़के या लड़कियों की कमर होनी चाहिए उतनी है, 70% मोटे, 70%। उनमें से सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो दिन में 30 मिनट चलते हैं, सिर्फ 20, 80% लोग 30 मिनट चलते भी नहीं। तो आपका भारत क्या होगा? तो बहुत डिफिकल्ट है आजकल मोटिवेट करना बच्चों को। सोशल मीडिया तो उस बात के लिए कि यार 80% लोग चलते ही नहीं है, तो आप करोगे क्या बैठ के सोशल मीडिया पे? दूसरा पॉइंट, अगर आपको रात को सोना है और आप ब्लू लाइट देख रहे, ब्लू लाइट आपके कंप्यूटर की है या आपके मोबाइल फोन की, तो आपका जो स्लीपिंग का हार्मोन है मेलाटोनिन, वो सीक्रेट ही नहीं होगा। You require no blue light for melatonin to be secreted for at least 1.5 hours. 1 से 1.5 घंटे अगर आप सोने से पहले आप वो देख रहे हो ब्लू लाइट, बिल्कुल ठीक नहीं, ये बच्चों को पता ही नहीं। तो उनकी स्लीप 12 बजे शुरू होती है, 1 बजे, कई लोग तो रात को 2 बजे सोते हैं। That is extremely unhealthy. Your best period in the morning is 4 to 5 to 6 o'clock. सोशल मीडिया पर कैसे ले जाएंगे तो आपकी बात है। और थर्ड, आई थिंक अगर आप वेस्ट देखेंगे, जो बच्चे, एक हेलेना स्टडी है बड़ी फेमस, HELENA, इसमें भी मैंने अमेरिका में और यूएस में, यूरोप में लगभग 60% बच्चे हेल्दी है, 40 अनहेल्दी। इंडिया का सर्वे देखें
तो 70% बच्चे अनहेल्दी। तो आप देख सकते हैं भारत क्या होगा। हालांकि सीजे इज वेरी फिट, देख के आई एम सो इम्प्रेस्ड कि हमारे काउंसलेट जनरल जो है न्यूयॉर्क इज लकी, बट यू आर लीड बाय एग्जांपल। एंड शाह साहब को देख लीजिए, ही हैजंट चेंज एट ऑल इन 50-60। You should come here more. So I think TV is also blue light. There are so many questions. I know they all want to talk. I think after the meeting we can keep talking. I'll take two more questions. One is Halisa, one is Urmaleshi because she is my class fellow, and Dr. Arya, our senior most from SMS. If I don't let her speak, I'll be in trouble. So Halisa, you, then Urmaleshi, till final one. I'll have that question. Then we will. हाँ, तो बस एक ही दो क्वेश्चन। हालिसा भाई दी एडिटर। ये मेरा Doctor, welcome to New York, and congratulations for what you have done. We are extremely grateful to the Consulate for organizing this session, and to Premji Shah, who has organized it. I have two-fold question. One is a request to the Consulate, because this space is too small to accommodate you and the community that needs your knowledge. If you can have a Howdy Modi in Medicine Square Garden, we can have your session in a larger place. So that is a request to the Consulate. Under his office, we can organize it. We will organize it. We have other friends here who can do it. To what you just said is extremely knowledgeable. It is my life will probably change from tomorrow, even though Dr. Brani keeps on telling me what to do. But has it occurred to you what the other friend said? That while we keep on learning books after books after books, we all are very highly educated people. But can there be a book like yours or your book which is inculcated, incorporated in the education system from the day one? While we learn A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, everything we learn from childhood, but never had a book like this. I wish we had a book like this where most of the 70% people would have probably gone to 7%. And you being a Padam Bhushan, so close to the Prime Minister, the government, Minister of Education, I think it will be worth if you could take, unless you have already taken it. This can change the direction of our country. Thank you very much. The only way I see is if you have the health and education ministry clubbed together, and first 10 years of life of a child, the health is more important as an education, and education is secondary. Because the child doesn't know what he is supposed to eat. Child doesn't know how much he is supposed to play. So I think it is the duty of the society and to educate the parents and the health and the education people कि बच्चे को 10 साल तक क्या खाना है, कितना एक्सरसाइज करना है. And your point is very valid, and I do hope we can move forward. And I do look forward for opportunities, if there are any, that this book or the message can be disseminated. And thank you. I just want to tell you one thing, that I think Dr. Shiv Sarin is the only physician who has addressed both houses in Delhi, Rajya Sabha as well as the parliament, on the health issues. I think he's the only one. So you can see how respected relation. Yeah, last question. Dr. Umile Shahdia, the pediatrician by profession, and we have been doing the blood test in children only at the age of 1. This is the first time I came to know that 1-month-old child should have the test for and should be checked for the fatty liver. I hope there should be some way that the pediatricians have the knowledge that the children should be checked for this condition, and because pediatricians are responsible for the growth and development of the children, and they are the ones who teach the parents what to look for, what food should be given, how the children should be taken care of. So is there any way, because it is so informative, I was really amazed how important it is for the children's development.
So is there any way that the pediatrician can be taught at a large scale? Very grateful, very, very grateful to you because this is very close to my heart, fetal medicine part, and there is a story of a lady and how the kids grow up, and you can look into how the gynecologists help. This is a true story. But to put it in perspective, about 10% you know better are children born who are overweight at birth. 1 in 10 in the world. And that is not the mistake of the child, it is the mistake of the mother. हम लोग कहते हैं यार pregnancy ज़्यादा खाना खिलाओ थोड़ा सा बच्चे के लिए अच्छा है. Which may not be the best way because the child is getting all that from the mother. Second, do not give sugar to the baby till the age of 3 years. Because all the bacteria which are settling for life are below the age of 3 years. So there is a nature paper that Asians give more sugar before the age of 3 years so the kids have fatty liver. So do not give colas or especially corn syrup or those with O's, O-S-C, fructose, sucrose, maltose, glucose. So anything with O's up to 3 years is avoided. Natural food is okay, and this has now come in the new dietary guidelines by the government of India, just released about a week or two ago, that do not give all this. And the third thing is the pediatrician is the actually backbone of our society. अगर आप बच्चों को पतला रखेंगे तो बड़े होकर के नहीं होंगे, पर अगर पतला बच्चा पैदा हुआ अंडरवेट और वो जाकर के ओवरवेट हो गया, because you are prepared for a small bag by your mother. This is your bag for the baby. But if that bag expands, and this is a New England paper by this guy Sachdeva, this is a whole series of studies published in New England Journal that babies who were born underweight, if they become normal weight or overweight, they are gone. So remember that you should try and help the society by keeping underweight as underweight, normal weight as normal weight, overweight as normal weight. Thank you, sir. Yes, absolutely, absolutely. And the YY phenomena. Please say, yeah. So, you have to have vote of thanks, I think. Before that, I want to thank Neela and Raj. Thank you so much for such an interesting question-answer session. Interesting and informative. I'm sure everybody can do a round of applause for Dr. Sarin and Dr. Shah. Such interesting questions from the audience and such informative answers from him. Yes, it is. It's available on Amazon. You can buy it on Amazon. May I now request our Honorable Consul General, sir, to please present a token of appreciation to Dr. Shiv Sarin. Thank you, sir. I would now like to request Dr. Raj Hayani to come here for the closing remarks. Dr. Raj Hayani, please. Dear and Honorable Consul General, Shashi Sir, our Chief Guest for today, Dr. Shiv Sarin. It is truly my pleasure and honor today to say my last words on behalf of the organizing committee. The word is gratitude. Thank you. As we all know, gratitude makes sense of past, peace for today, and vision for tomorrow. We are all grateful for Consul General Sir and DC Sir for welcoming, opening your heart, as well as the Consulate for giving the space
and organizing it for such a short time, in such a short notice. Thank you so much. As the saying thanks is giving to me is like putting a drop in the ocean, because all of you deserve so much more than just a word of thanks, because on a busy evening, in a weekday, you all came here. You all are eminent leaders of society. So every one of you who came here from the bottom of our heart, on behalf of 3 organizations, RPQLI, Rana, and Rajmai, I thank you all. Thank you so much. Have a wonderful evening.